Yes, ma'am. Can you hear me, Chandrika? Yes, ma'am. All right. If you don't have a problem, can you turn your camera on because I can't see you? Yeah, okay. Now you're visible. 1 minute, ma'am. Sure. Yeah, okay. Perfectly visible. Okay, Chandrika, please Okay, ma'am. introduce yourself. My camera is not on. No, no, we can see you. No Good problem. evening, ma'am. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Chandrika, and I completed my graduation from Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University. I came from Muzaffarpur district of Bihar. Since 2024, I have been preparing for various agriculture exams, and in my free time, I love to write diary. All right. You said you love to write diaries. So, what kind of writing do you do? Like based on personal life or based on motivation or based on poetries or stories? Ma'am, I used to write personal diaries in which I write whatever happened to me at that day. I used to write and my feelings. All right. Okay. So, you said that you come from Bihar, right? So, in recently, Bihar has Yes. been in the news because something related to makhana is happening over there. Like in the budget, something was stated. Can you please tell what was that? Yes, ma'am. In budget, the government has allotted a budget of 4.67 crore for inauguration of Makhana board in Purnia, Bihar. All right. Okay. Have you heard about Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Can you explain that? Yes, ma'am. Under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, insurance is provided to the farmer where he can get the insurance for the crop if the crops fails due to the natural calamities like flood, drought, these types of things. And recently, two more things is added. One is wild animal attack, and the second is water logging. All right. So, do they have any premium for Fasal Bima Yojana? Yes, ma'am. Generally, the Rabi crop has 1.5% of premium, Kharif has 2% of premium, and the horticulture crop has 5% of premium. Okay, all right. Talking about being an AFO, just take a situation where you are posted to a remote location where the connectivity of everything is a bit on the lower side. Like you don't have that much facilities of house help and everything. So you have to manage everything by your own. So how will you tackle that situation being an employee of the bank where you have to stay late beyond the timing as well because sometimes the uh, schedule becomes hectic. So how will you manage that being a girl? Ma'am, being a girl, I will try to manage all the situation. I will try to have a good communication skill with my colleagues. And if any situation, such situation comes that I am late at night, then I will seek the help of my colleagues there. Um, so I will manage these things. All right, okay. Have you heard about Kisan credit card? Recently, the limit was changed. Can you tell me what was the limit changed of the collateral free loan and the loan limit? What was that? Yes, ma'am. The loan of the KCC has increased from 3 lakh to 5 lakh, and the collateral is also increased from 1.6 lakh to 2 lakh. Okay, all right. So you talked about collateral. What do you mean by collateral? Ma'am, collateral is something which we give to the bank as in security. If we take the loan and we are unable to repay that, so in that case, the bank can collect the loan amount from that collateral by whatever bank wants to do with that collateral. All right. Do you know anything about bad banks? Have you heard about bad banks? Ma'am, I am not sure about this, but can I make a guess? Yeah, sure. Go ahead. Ma'am, I think bad banks have given the responsibility of NPA accounts. They deal with NPAs. Yes, yes, you're correct. Just you need to frame this. You are correct. Just study about that.
All right. So talking about overdraft facility, do you know any such scheme that provides overdraft facility, and what is the amount of that? Ma'am, recently government provides overdraft facility to Jan Dhan accounts also, where it is 2,000 limit is there. Yeah, the limit, you need to check the limit, and you're correct. It's Jandan accounts, but the limit that you're stating, that is wrong. Check upon it, okay? And the last question to you is, like you are in Bihar, so talking about makhana, why is government stating, I mean, emphasizing so much in makhanas? What is the speciality of that? Do you know any nutritional qualities of that makhana? Um, Ma'am, makhana is rich in minerals and vitamins. This, ma'am, I'm not sure about this. Sorry, ma'am, I will Okay. read about this. No problem, Chandrika. Everything was fine. Just focus on two things. One is banking terminologies, and secondly, you are from Bihar. So recently, it has been in news because of Makhana. Makhana board is also being set up there. So just read about that, because you can be asked about that also. So just read about that. Don't forget about it. Okay, ma'am. Rest everything was fine. Your confidence was also fine. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Rohan Bhardwaj, are you there? Yes, ma'am. All right. If you are comfortable, can we start? Yes, ma'am. All right, please introduce yourself. Good evening, ma'am. My name is Rohan Bhardwaj, and I am a resident of Supol, Bihar. Sir, ma'am, I have done my BSc Agriculture from Dr. RPCU, USA in 2025. And ma'am, in my family, we are 5 members, including me, my parents, my elder brother, and my grandmother. And ma'am, मैं फ्री टाइम में क्रिकेट खेलना काफी पसंद करता ओके। तो आपने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आप हायर स्टडीज के लिए हूँ। क्यों नहीं जाना चाहते, लाइक फॉर एमएससी पीएचडी? व्हाई डू यू वांट टू गो इन दिस गवर्नमेंट सेक्टर? मैम, हायर स्टडीज करना मेरा प्रायोरिटी कभी से नहीं था मैम। जब बीएससी एग्रीकल्चर में आए तभी मैम सोचे थे कि एएफओ के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो दैट्स व्हाई मैम। ओके। तो रोहन, अगर पूछा जाए कि आप में ऐसी कौन सी दो स्ट्रेंथ्स हैं और दो ऐसी कौन सी वीकनेसेस हैं, तो आप कैसे खुद को डिफाइन करेंगे? मैम, स्ट्रेंथ में मैम मैं थोड़ा ट्रस्टवर्दी हूँ और थोड़ा लॉयल हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ मैम, और चीज़ें जल्दी सीखने का ट्राई करता हूँ। और वीकनेस तो ऐसे मैम, मैं सब वीकनेस तो होती है लेकिन मैम उस पर काम करते हैं, और थोड़ा सा थोड़ा ओवर ओके। थिंकिंग कभी कभी हो जाता है उसमें। ओके, ऑलराइट। आपने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में सुना है? जी मैम, सुने हैं। हाँ जी, बताइए। एग्रीकल्चर मैम, ये बेसिकली 2020-21 में लॉन्च हुआ, और इसके तहत 9% इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है, और सब्सिडी भी है मैम, लेकिन वो उसका मैक्सिमम लिमिट 3 करोड़ तक ही है। मे बी शायद 2 करोड़ है शायद मैम, 3% रेट तक। ओके। श्योर नहीं है मैम, बट अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, ओके। तो जी मैम। बैंकिंग में आरबीआई का क्या रोल है, मतलब इकोनॉमी में, या फिर आप कह सकते हैं बैंक्स को रेगुलेट करने में आरबीआई का क्या रोल है? मैम, आरबीआई एक तो बैंकर्स बैंक है, बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, पूरा मॉनेटरी पॉलिसी वही रेगुलेट करता है मैम। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आता है सब आरबीआई ही देखता है, मनी रेगुलेटेड सारा कुछ मैम। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी वही है, ओके। करेंसी इशू करता है मैम। ओके। ओके। आपने मनी जी मैम। लॉन्ड्रिंग के बारे में सुना है? जी मैम, सुना है। हाँ जी, क्या होता है वो? मैम, जो कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होता है, ब्लैक मार्केटिंग टाइप का, ज़्यादा हम पैसा वो लोग जनरेट कर लेते हैं इलीगल वर्क करके, तो फिर वही मैम मनी लॉन्ड्रिंग होता है। उसको ओके, स्मॉल ऑलराइट। अमाउंट्स में अलग अलग। जी मैम। ओके। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं? मैम, बेसिकली जो नेचुरल
वेस्ट से एग्रीकल्चर करना, जिससे एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, फर्टिलाइजर्स वगैरह का कम यूज़ करके, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को देखते हुए, वही मैम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है। अभी गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी है इस पे। करेक्ट। तो जो आपसे पहले फीमेल आई थी, मैंने उनसे, वो भी बिहार से थी, मैंने उनसे एक मखाने को हम्म। लेकर क्वेश्चन पूछा था। तो आपको आता है उसका आंसर, लाइक मखाने में से कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं, या उसको इतना सरकार एम्फोसाइज क्यों कर रही है, क्या रीजन है उसका? जी मैम, मखाना तो मेरे रीजन में ग्रो भी होता है मैम। आजकल तो लोग प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा मखाना ही। उसमें मैम कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, और प्रोटीन्स इनरिच्ड होता है मैम मखाना, इसीलिए उसको सुपर फूड भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है। और अभी हमारे एरिया में काफ़ी ज़्यादा, पहले जूट होता था इधर सुपौल रीजन में, लेकिन अब इधर भी लोग मखाना उगाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मैम। ओके। तो जैसे आप बिहार से हैं, तो अगर मखाने की बात ना करते हुए अदर क्रॉप्स की अगर बात करें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की, तो ऐसे कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं जो आपने अपने रीजन में या आसपास देखे हैं? मैम यहाँ पैडी का कल्टीवेशन काफ़ी होता है, और वीट भी है। राबी मेज काफ़ी एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है बिहार में मैम। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि, और फ्लड के रीजन की वजह से भी लोग राबी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं इधर। और मैम करेक्ट। मेरे एरिया में स्पेशली जूट भी काफ़ी होता है। ऑलराइट, करेक्ट। रोहन, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। आप जो भी आंसर्स कर रहे हम्म। हैं बहुत एप्ट कर रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, इन शॉर्ट। एंड सारी चीजें आपको वर्ड टू वर्ड पता है। बस आपने जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आप जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, बस जी मैम। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंफ्यूजन तो होती है, वो हो सकती है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट बाकी वर्ड टू वर्ड आपकी चीजें एकदम सही हैं। बस आप, आई थिंक थोड़ा सा आप अंदर से नर्वस हैं, बट आप आंसर जब सही दे रहे हैं तो आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप बहुत अच्छे थोड़ा से सा हो आंसर जाता कर है रहे हैं। मैम, मतलब। जी आई मैम। अंडरस्टैंड दैट, बट आप आंसर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप गलत नहीं आंसर कर रहे हैं, आप एकदम सही आंसर कर रहे हैं। आपको बस ठीक है मैम। प्रैक्टिस करनी है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या अपने घर वालों के सामने प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से परफेक्शन आ जाएगा। आपके पास नॉलेज बहुत है, और बस कॉन्फिडेंस से जवाब दो। बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जी मैम, थैंक यू। ऑलराइट। ओके। हर्षदीप। ओके हर्षदीप, इफ यू आर मैम। कंफर्टेबल, कैन वी स्टार्ट हर्षदीप? यस मैम। ओके, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Ma'am, my name is Harshdeep. I belong to district Kathal, Haryana. I have graduated from Chaudhary Charan Singh Haryana Agriculture University, Hisar, and I am currently pursuing Masters in Horticulture, Fruit Science in Banaras Hindu University, Varanasi. And coming to my hobbies, मैम मुझे क्रिकेट खेलना और कविता लिखना पसंद है। ओके। तो हर्षदीप, जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स कर रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर में प्राइवेट यस मैम। इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा स्कोप है। आप खुद मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। तो आप उस तरफ ना जाके, या फिर पीएचडी की तरफ ना जाके, एक एएफओ ही क्यों बनना चाहते हैं? मैम मेरा ग्रेजुएशन से ही वैसे टारगेट तो एएफओ था, लेकिन मैं वैसे को मैम एज अ बैकअप लेके चल रहा हूँ मैम। अभी अब मैं तो यही आशा रखता हूँ कि मैं एएफओ बन जाऊंगा, लेकिन बाय चांस अगर नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है, तो कम से कम एमएससी करके और आगे किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर सकता हूँ। ओके, ऑल राइट। तो एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन आपसे करती हूँ मैं। लाइक कल को अगर आप अपनी ब्रांच में हैं, आप एएफओ बन जाते हैं, आप अपनी ब्रांच में हैं, आपका आपके सीनियर्स से या फिर आपके कलीग से किसी भी छोटी सी बात को लेकर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? मैम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें मेरा कोई उनसे झगड़ा हो जाता है, तो मैं उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखूंगा। आई विल ट्राई टू बी मैम आई विल ट्राई टू बी विद अ गुड टेम्परामेंट। एंड मैम मैं उनसे पहले बात करके पूछना चाहूंगा कि मुझसे क्या गलती हुई है और क्या मैं सुधार कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैम उनसे बातचीत करने का ही रास्ता सबसे सही रहेगा। ओके, वेरी वेल।
आपने एक ड्रोन के लिए अभी रिसेंटली स्कीम आई थी, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो। मैम नमो ड्रोन दीदी एक स्कीम आई है करेक्ट। जिसके अंदर वीमेन 15,000 वीमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। 15,000 ग्रुप्स को मैम, एफपीओ जो वुमेन के ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट एक उनका मेन एम है, जिससे कि आजकल की जो महिलाएं हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। ओके। किसान मत्स्य सॉरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आप क्या समझते हैं? मैम सॉरी मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। ओके। और कृषि सिंचाई योजना? सॉरी मैम, आई एम नॉट ओके अवेयर अबाउट दिस। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके। आपने सरफेसी एक्ट के बारे में सुना है, या फिर आप कह सकते हो कि जो, चलो सरफेसी एक्ट नहीं, आपसे ये पूछते हैं कि इन केस कोई कस्टमर आपके पास आता है, फार्मर है वो, एंड उसके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है उसकी, उसने डिफॉल्ट किए हैं प्रीवियस में, पास्ट में, सो हाउ विल यू डील दैट? मैम ऐसा किसान जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक नहीं है, तो मैम पहले उनके साथ बातचीत करके कि आप मतलब कंडीशन कैसी है आपकी घर की, और मतलब कैसे कि पिछले क्रेडिट की हिस्ट्री देखना चाहूंगा मैम, कि पहले लोन किस बेस पे लिया था उन्होंने, और और रीजन उनके कि क्यों वो रीपे नहीं कर पाए मैम। एंड आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट हिम कि आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए। ओके। हर्षदीप, जो करंट अकाउंट होते हैं और सेविंग्स अकाउंट होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम सेविंग्स अकाउंट वो होते हैं जो कि पब्लिक, मेनली पब्लिक के लिए होते हैं, जिसके अंदर जो लोग अपने सेविंग्स डिपॉजिट करके रखते हैं। लेकिन करंट अकाउंट मेनली मैम बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, जिसके अंदर मेनली जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डिपॉजिट सेव करते हैं। ओके। इन दोनों में आप एक और डिफरेंस बता सकते हैं आगे हर्षदीप, ये कि जो इंटरेस्ट वाली चीज होती है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड सेविंग्स में सेकेंडली, विड्रॉ जो लिमिट होती है वो सेविंग्स अकाउंट में एक लिमिटेड होती है, बट करंट अकाउंट में विड्रॉ लिमिट नहीं होती, मतलब लिमिट नहीं होती है उसमें। ऑलराइट। ओके मैम। आपने किसान मानधन योजना के बारे में सुना है? यस मैम, पीएम किसान मानधन योजना हम्म। अभी ये मैम सेंट्रल सेक्टर की स्कीम आई है, जिसके अंदर 18 to 40 ईयर्स के जो अभी इंडिविजुअल्स हैं वो अपना डिपॉजिट, अपने जो प्रीमियम है वो दे सकते हैं, इसके लिए अप्लीकेबल हैं। और उनको 60 ईयर्स के बाद 3,000 पर मंथ की पेंशन दी जाती है। ओके। हर्षदीप, आपने जो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस थे और जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज ओके थी वो आपने बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करी हैं, उनमें सबका जवाब आपने दिया। ओके बट आपने जो, मैंने दो मेजर स्कीम्स पूछी थी, एक सिंचाई योजना यस पूछी मैम। थी और एक और फसल बीमा पूछी थी, तो वो यस मैम। दोनों आपने नहीं बताई। बट कि वो मेजर यस थोड़ी मैम। स्कीम्स हैं, तो आप स्कीम्स को थोड़ा सा देखना, क्योंकि मेजर स्कीम्स आपको याद होनी चाहिए। सिंचाई योजना ओके और ये मैम। मानधन सम्मान निधि योजना और एफपीओ, ये कुछ स्कीम्स हैं जो मेजर स्कीम्स हैं, जो हर साल आती ही हैं, मेंस में भी आप स्कीम्स पढ़ी होंगी आपने, आपको बस रिवाइज यस करने मैम। की जरूरत है, एक बार आप स्कीम्स को देख लीजिएगा। बाकी आप बोल यस भी मैम। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी ऑन पॉइंट है, बस स्कीम्स आपको देखनी है। यस मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके। अंबिका, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Oh, all right, Ambika. If you're comfortable, can we start? Yes, ma'am. All right. Okay. So please introduce yourself, Ambika. I am Ambika Dash from Holdia, Purbo Mednipur. I have completed my graduation and post-graduation in 2023 and 25 from Bidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya. I have completed my graduation in agriculture and post-graduation in agricultural entomology. My hobby is recitation
and I want to become a successful person in my life. Okay. Since Ambika, you have done your master's in entomology, and it is one of the major subject, right? So why don't you go for Yes, higher studies? Why don't you want to go for higher studies or for the research work? because ma'am, the job provide me financial stability and it is required for me now. That's why I am not go for higher study. Okay. So as an AFO, you will, if you become an AFO, so you will have to travel to remote areas, do field visits as well, deal with different kinds of people, and doing the field visits, recovering the loans. So being a female, how will you manage that? Ma'am, actually, when I am in our university, I used to go to field at 7 a.m. and do many work like remove weed and maize cultivation, uh, paddy cultivation, and apart from that, I also lives in a rural area. So journey is not a uh, issue for me. Okay, I all can do right. it well. Travel is not a issue for me, and um, journey is not a issue for me. It I can easily do it. Okay. So आपने एक बात बोली that you had a chance to live in the village and visit the people. तो आपने कौन सी problems वहाँ देखी? What kind of problems do they face? The farmer community or the rural background? हाँ, yes मैम एक्चुअली स्कीम होता है ना एग्रीकल्चर का स्कीम हाँ जी. उन लोग का उन लोग का अच्छे से नहीं पता उसके बारे में कोई कोई apart from that they have no scientific knowledge about the scientific knowledge about agriculture. Okay. So nowadays, government is focusing on digitalization in agriculture. Okay. So while you have visited a village and you have been there, so you might have understood that the people still today in the village and in the remote areas, they are not so much digital. So do you think that digitalization has properly reached every corner, or is it still lagging behind, and how? Yes, ma'am. I think that digitalization should be reach every corner of our country because when government want to digitalize it, at at first they must ensure that every people take the profit of that. Okay. All right. Though internet, okay. Continue, continue. Though internet is not issue at my area, but I know that many corner of our country internet is a issue. Okay. What do you understand by contactless payment? Contactless payment means uh, digital payment is actually known as contactless payment, means without any contact of money. Actually, digital payment is called contactless payment. Yes, you can give examples like Phone Pay, Google Pay. When we scan a QR, it's a contactless payment. Mhm. Okay. All right. So if I ask you, how will you help to increase a farmer's income? Ma'am, I explain about different scheme like KCC, PM Kishan, um, PM Pradhan Mantri Fashal Bima Yojana, and many other scheme. Apart from that, I visit the field and I will give him or her the technical knowledge about the agriculture. In this way, I think I may progress the system of agriculture. All right. Have you heard about Paramparagat Krishi Vikas Yojana? Yes, ma'am. Okay. What is it? It is to increase the sustainable agriculture. It mainly focus on organic agriculture. Okay. There's a certification involved in Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Do you know about that certificate?
PGS. Yes, correct. Correct. All right. Recently, in your area, what kind of varieties have you noticed, or what kind of crops have you noticed growing around you? Mainly here monoculture of paddy takes place. It Okay. is a coastal area, monoculture of paddy. Okay. Can you name Dudeshwar any two variety, varieties? Hmm. Dudeshwar. Um, Okay. So, what is the specialty of that variety? it is specialty. It is mainly grown in coastal area. Okay. What is the difference between FPOs and self-help groups? FPO is farmers producer organization, means here a farmers group is formed where they cultivate crops togetherly and take loans for that, and they also marketize their produce togetherly. Apart from that, self-help group is where they make many things. Actually, self-help group means they made many things apart from agriculture, um, which increase their social stability. Self-help group mainly female are joined there. Okay. Ambika, you are answering correctly. Like two, three answers, you knew it, but you had a self-doubt that is this answer correct or not, but the answer was correct. So that doubt that you are creating inside you, just remove that first, because the answer that you are giving are correct. But because of that doubt, you are not able to answer that. Correct? But your answers are correct because you have good preparation. Your preparation is on point because major things that I asked you that you already know. Secondly, about the varieties, because it's a coastal area, so they might ask about the varieties that are grown there and the specialty. So not many, just look for two, three varieties and their specialty. These kind of varieties which are not grown in other regions, only in your particular region, just look for that. All right. And the second thing that you have to do is just to practice, because you need to build up a bit of confidence. After that only you will have removed that self doubt, because without that confidence, self doubt will not go, because you are answering correctly but you think that answer might be wrong. That is why you stop answering, and you should know that you are answering correctly. Just focus on your focus on your self doubt. You should not have that. Apart from that, Okay, ma'am. very good. You're doing very good. Apart from that. Hello, good morning, ma'am. Good morning. How are you? Yes, ma'am. I'm good, ma'am. Okay. If you are comfortable, start कर सकते हैं. Yes, ma'am. Start कर सकते Okay. All right. तो आप किस में ज्यादा comfortable हैं, हिंदी और इंग्लिश? हैं। दोनों में कंफर्टेबल हूँ. Okay. So विशाल, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. Yes, ma'am. My name is Vishal Thakur, and I belong to district Mandi, Himachal Pradesh. And I've done my graduation in horticulture from Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture and Forestry, Solan. And after that, I've done my master's in fruit science from Assam Agriculture University, Jorhat. And after that, I worked as a field officer in biocrop science.
and right now I'm preparing for competitive exams. And my hobbies are working out and doing yoga. Okay. Vishal, you have already worked as a field officer in Bayer, right? So, Yes, why ma'am. leaving that job and now studying for becoming an AFO? Why this transition? Yes, ma'am. Soon after my post graduation, I started preparing for various competitive exams like banking and other state exams. And while working, I didn't get that much time for preparation. So at last, I decided to resign from the job and continue my preparation. ओके तो आपने मास्टर्स भी किया हुआ है राइट आपने हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स किया हुआ है एंड हॉर्टिकल्चर का ऑलरेडी खुद में ही काफी ज्यादा स्कोप है हायर स्टडीज में भी है बिजनेस में भी है तो आप उस तरफ ना जाके व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन एएफओ बिकॉज मैं बैंकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। बैंकिंग एक मतलब प्रोवाइड करती है, एक स्टेबल जॉब प्रोवाइड कर रही है और ग्रोथ भी अच्छी है बाकी सेक्टर के मुकाबले। और और मैं मतलब रूरल और एग्रीकल्चर कम्युनिटी को सर्व करने का मौका मिलेगा while वर्किंग एज एन एएफओ। ओके दिस आपने इज द बोला मेन। कि ओके आपने बोला कि रूरल कम्युनिटी को आपको सर्व करने का चांस मिलेगा तो अगर चांस मिलता है तो ऐसी क्या चीजें हैं करंट सिनेरियो में जो एग्रीकल्चर फार्मर फेस करता है डिफिकल्टीज और आप एज एन एएफओ उनको सुधारना चाहेंगे अगर आप एएफओ बन जाते हैं बहुत से रूरल एरिया में मैम जो क्रेडिट है वो अभी भी मतलब इनफॉर्मल है। मतलब दे आर नॉट गेटिंग formal loans from banks or maybe an NBFCs or small finance bank. They're getting loan from their local lenders. So I can help while working as an AFO, the farming community. ओके जैसे कि आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल में वेजिटेबल्स आपने कौन कौन से अपने रीजन में देखी हैं ग्रो की हुई या फिर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो इस फील्ड से जैसे हमारे एरिया में हम बेसिकली राबी सीजन वेजिटेबल उगाते हैं, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली भी उगाते हैं। और खरीफ सीजन में टोमेटो और क्रॉप्स उगाते हैं। ओके कैबेज आपने बोला और कॉलीफ्लावर बोला तो कॉलीफ्लावर की बात करें तो आपने अपने रीजन में कौन सी ऐसी दो वैरायटीज देखी हैं और उनकी क्या स्पेशलिटी है वो आप बताइए कॉलीफ्लावर में हम पूसा स्नोबॉल उगाते हैं। हम्म, पूसा स्नोबॉल मतलब इसका जो वेट है वो 1 kg के अराउंड होता है। मतलब सभी वैरायटीज में सबसे बड़ा इसका जो फ्लावर हेड होता है। और ये बिल्कुल ब्राइट वाइट कलर की होती है और इसका मार्केट में वैल्यू भी अच्छा है। मतलब गुड गुड प्राइस फेच करते हैं फार्मर्स। ओके हिमाचल इज एन हिली एरिया तो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी हैं आपके एरिया में हम इरिगेशन फैसिलिटी हमारे एरिया में मैम बेसिकली थ्रू द कैनल्स, मतलब कैनल के थ्रू ही इरिगेशन होती है। और जो सब प्रोग्रेसिव फार्मर है वो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स का भी यूज करते हैं। ओके ऑलराइट आपने कोलेट्रल के बारे में सुना है व्हाट इज कोलेट्रल यस मैम। कोलेटरल इज जो लोन लेने से पहले जो कोई बोरोवर है वो कोई भी सिक्योरिटी देता है बैंक या फिर किसी भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। ओके व्हाट इज पीएम आशा स्कीम सॉरी मैम, इस टाइम याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं ऑल राइट माइक्रो इरिगेशन फंड के बारे में आपने सुना है यस मैम। माइक्रो इरिगेशन फंड मैम मतलब फार्मर जो कि ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन को मतलब अपनाना चाहते हैं उनके लिए फंड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है उनको। ओके यूपीआई से आप क्या समझते हैं आजकल बहुत ज्यादा यूपीआई का प्रमोशन भी कर रही है गवर्नमेंट की ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन करे सो व्हाट डू यू मीन बाय यूपीआई UPI basically stands for Unified Payment Interface,
एंड दिस इज द मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है विच इज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, और इससे हम फास्ट पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं। Okay, all right. So, just imagine a situation where you are an AFO and आपके पास फार्मर आता है. He has a defaulter. He is a defaulter basically. He does not have that good credit history. He is a defaulter. And you came to know that he is a willful defaulter. उसने पास्ट में जो भी चीजें की हैं वो जानबूझ के उसने रीपेमेंट नहीं किया या व्हाटसोएवर द रीजन, बट ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर. और उसको फिर से अब आपसे एक लोन चाहिए. ही केम टू यू कि सर मतलब कुछ सेटलमेंट करके लोन चाहिए, या फिर होता है ना रिस्ट्रक्चरिंग वाली चीज, तो अब वो उस चीज को नेग्लेक्ट कर रहा है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, और वो फर्दर कम्युनिकेशन करना चाह रहा है. हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? सबसे पहले तो मैं उसके मतलब रीजन पूछेंगे कि क्यों डिफॉल्ट किया है. अगर उसका मतलब वैलिड रीजंस हैं उसके लोन का डिफॉल्ट होने का, तो हम मतलब मैं और मेरे सीनियर्स मिलके उसकी हेल्प कर सकते हैं. अगर वो विलफुली डिफॉल्ट कर रहा है फिर तो उसको लोन नहीं देना चाहिए, और उसका सिबिल स्कोर वगैरह भी सब कुछ चेक करेंगे. ओके. करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है विशाल? करंट अकाउंट में सिर्फ बिजनेस होल्डर और ट्रेडर्स का खोला जाता है, और सेविंग अकाउंट कोई भी नॉर्मल पर्सन खोल सकता है. और सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है ऑन द डिपॉजिट, एंड इन द करंट अकाउंट वी डोंट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स. ओके. ट्रांजैक्शन लिमिट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या सेविंग्स और करंट अकाउंट में? यस मैम, सेविंग अकाउंट्स में मैम डेली ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती हैं. इट्स अराउंड 30,000 फॉर मोस्ट ऑफ द बैंक्स, और करंट अकाउंट में मैम कोई लिमिट्स नहीं होती. ओके. जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर से हैं, तो आपने एक स्कीम के बारे में सुना होगा, विच इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? यस मैम. हाँ जी, क्या होती है वो? This is basically an umbrella scheme in the horticulture sector, which consists of various schemes like for the installation of greenhouses, micro irrigation के लिए, and it also consists of bamboo mission, and also other schemes for beekeeping and mushroom culture. मतलब whole horticulture sector came under this scheme, comes under this ओके. scheme. ओके विशाल, हिमाचल में आईसीआर के कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं. आप कैन यू नेम देम? कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं आईसीआर के हिमाचल में? Yes, ma'am. First is ICR CPRI, Center Potato Research Institute, and ma'am, one is a mushroom research station, and ओके. Directorate कौन of कौन सी Mushroom. लोकेशंस पे हैं दोनों? And CPRI is in Shimla, the potato wala, or the DMR for mushroom is in Solan. ऑलराइट. विशाल, आपकी नॉलेज तो अच्छी है, और आप बस एक आपको स्कीम्स पे थोड़ा सा फोकस करना है. जैसे कि मैंने पीएम आशा बोला, जी मैम. वो आय संरक्षण योजना थी. आप बाद में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, बट एट दिस मोमेंट शायद आपको वो याद नहीं आया होगा. अभी मतलब पढ़ा नहीं है स्कीम्स का, भी देख ही रहा था अभी. अच्छा, नहीं, आप स्कीम्स पढ़ लेना, क्योंकि स्पेसिफिकली आपकी जो हॉर्टिकल्चर के लिए जो भी वेरियस स्कीम्स आई है ना, हॉर्टिकल्चर पे आप फोकस करिएगा, क्योंकि आपकी मास्टर्स भी है ना उससे. और अगर आप मास्टर्स बताएंगे तो वो लोग आपसे हाँ जी. क्वेश्चंस मास्टर्स से पूछेंगे. मास्टर्स इन द सेंस कि आपका हॉर्टिकल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. सेकेंडली, हाँ जी. हिमाचल में जो वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपका कैबेज, कॉलीफ्लावर और फ्रूट Cauliflower, क्रॉप्स cabbage. होते हैं. फ्रूट क्रॉप्स जी भी मैम. होते हैं, तो आप इन क्रॉप्स को देख लेना, क्योंकि आपका मास्टर्स है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इन सब चीजों में अच्छे से नॉलेज हो, जो कि आपको है. आपने क्रॉप्स भी बताए, वैरायटीज भी बताई मुझे. आप बस स्कीम्स पढ़ जी लीजिएगा. मैम. एंड सेकेंडली, जी मैम. आप जो भी आंसर्स दे रहे हो आप अच्छे से दे रहे हो, बट आप जो बीच बीच में अटक रहे हो ना, आप प्रैक्टिस करना. बिकॉज आपको आता सब है, आप आंसर्स भी अच्छे से दे रहे हो, बस आप अटक रहे हो, और आपको अंदर से लग रहा होगा कि आप शायद सही आंसर नहीं दे रहे हो, इस वजह से आप अटक रहे हो या तो. बट आप आंसर सही दे रहे हो, आपने जो भी आंसर दिए वो सही दिए.
सेकेंडली, जी मैम। एक क्वेश्चन में मैं आपको आंसर को आपका रिफ्रेम करना चाहती हूँ। मैंने जो वो डिफॉल्टर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अगर कोई फार्मर आए वो डिफॉल्टर है, तो अगर मैं क्वेश्चन में ये मेंशन कर रही हूँ कि वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, तो आप वहां ये लाइन मत जोड़िएगा कि मैं ये जानूंगा कि उसने डिफॉल्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने बोल दिया आपसे कि वो विलफुल डिफॉल्टर है। अगर मैं जी आपसे ये बोलूं कि उसने लोन रिपेमेंट नहीं किया या वो एक डिफॉल्टर है, तब आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो डिफॉल्टर क्यों है। बट अगर विलफुल वर्ड यूज कर दिया गया पैनल के द्वारा भी, तब आप ये चीज नहीं जी मैम। बोलेंगे कि मैं रीजन जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है। फार्मर विलफुल है मतलब वो जानबूझ जी के कर रहा है। ठीक है, तो ये आंसर आप अपना रिफ्रेम कर लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा था, बस आप प्रैक्टिस करिए। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैम। उतना ज्यादा आपका फ्लो सही रहेगा। ओके मैम। बाकी मैम एक क्वेश्चन था, हाँ जी। जैसे कि जो मैंने जॉब किया ना जैसे फील्ड ऑफिसर, वो अराउंड 1 मंथ ही किया है मैंने, तो मतलब मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपने फॉर्म फिल करते टाइम मेंशन किया है क्या? वैसे तो नहीं किया होगा ना फॉर्म फिल करते टाइम। नो मैम, फॉर्म में नहीं किया है क्योंकि एक्सपीरियंस हाँ तो आप सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप मत मेंशन करना। अगर आप चाहते हो पर्सनली मेंशन करना तभी करना, अदरवाइज मत करना मेंशन। आप यही कहना कि मैं फोकस्ड था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई हिस्ट्री तो है नहीं कि उनको पता चल जाए कि आप जी ऑलरेडी मैम। कहीं एम्प्लॉयड थे। तो आप मत मेंशन करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और अगर आपका मन है मेंशन करने का, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हो कि मुझे मतलब मैंने एक्सपीरियंस लिया, और क्योंकि मैं फील्ड ऑफिसर ही था तो मुझे एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि मैं और अच्छा आगे एक एएफओ बन के सर्व अच्छे से कर पाऊंगा। जी और ये 1 मंथ वाला बताना मत। इनकेस अगर वो पूछते हैं कि आपने कितने टाइम किया है जॉब, तो आप बोलना सर मैंने ज्वाइन किया था, बट मैंने 1 मंथ किया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक अपना फ्यूचर में पब्लिक सेक्टर में देखता हूँ, मैं एज अ बैंकर जी। अपना फ्यूचर देखता हूँ, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। आप ये चीज बोल सकते ओके मैम। हो। ओके, थैंक यू सो मच विशाल। ओके, थैंक यू मैम। ओके लिगम। ऑलराइट, यू आर नॉट विजिबल लिगम। हाँ, यू आर विजिबल ना। ऑलराइट, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. ऑलराइट, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good morning, ma'am. My name is Ligam and I belong to the land of Rajasthan, that is Arunachal Pradesh. I have completed my graduation in agriculture from Ravi Professional University, Punjab. After that, I have completed my post-graduation in agriculture agronomy from Arunachal University of Studies, Namsai, Arunachal Pradesh. After completing my post-graduation, I started working as a cluster farm development, sorry. After It's completing okay. my post-graduation, I started working as a consultant for cluster farm development under kitchen gardening under the Department of Rural Development. Currently, I am working as a block technology manager under our Agriculture Technology Management Agency under Department of Agriculture in Arunachal Pradesh. And I have like 3 years of working experience as a block technology manager, and I believe my working experience along with the farmers and also my knowledge regarding the schemes which are being introduced by the department will contribute a lot to the position for which I'm applying for. That's all about me. Thank you. All right, Ligam. So you are already working, and also you have an experience in the past of working and being employed. So why leaving the private sector and coming to the government sector, apart from the job security that the public sector provides? What is your reason to become an AFO? Uh, Actually, ma'am, like I have various reasons. Firstly, like since childhood, I have been very much interested in banking sector. It's like it was one of my dream job to work in the it's like my dream to work in the banking sector. But while growing up, like my interests also went towards agriculture since agriculture is the backbone of our economy. So it I also therefore as agriculture field officer is the perfect job, like combining uh, both those two reasons, like it's the perfect job for me. Because of that, I really want to become an agriculture. All right. So you mentioned something that agriculture is a backbone of our country and of our
economy, right? So, do you really feel that the farmers or the rural areas are genuinely provided the rights or the things that they should be deserving? Do you think that they have been provided exactly what they deserve? No, man. To be honest, currently, I don't feel like they are getting as much as they should get. Like even though the government they are trying to bring various schemes in order for the farmers to develop, but I don't think that they are getting as much as they should get. And as far as I've seen in my region also, like there are various things which are being introduced by the government, but the farmers they are not made aware of it. Like maybe due to miscommunication or anything, they are not made aware of this, because of which the farmers they are not able to get benefits out of those things also. So I don't think right now the farmers are getting as much as they should. All right. Have you heard about Matsya Sampada Yojana? What is that? Matsya Sampada Yojana, it is basically a scheme for fishery development. It was introduced in 2016. I'm really sorry, I'm really not sure about the year, but it's a scheme which is related to fishery development. Okay. Do you know how much the government has kept as a percentage in the Matsya Sampada Yojana in the coming years? When it was launched, how much percentage has the government kept that they should bring this much tons or this much percentage of improvement in the farmers? Are you aware about the values that are involved in this? Sorry, ma'am. Right now I'm not aware of it, but I'll make sure to. All right. Have you heard about farmer producer organizations? Yes, ma'am. Farmer producer organization, they are basically like a group of farmers which those who have same interest, like they basically form a group in order to they basically like they basically have same interest, and they basically grow they grow various products, and not various the grow products and sell in the market. Like I'm really sorry, I'm really It's all because right. It's all of right. this. It's all right. Have you heard about ENAM? What are they? They are basically online platforms in which the farmers can sell their products. Okay. What is the full form of that? ENAM. Mm, Sorry, ma'am, I cannot recall it this moment. Okay. No problem. Have you heard about banking ombudsman? But I've heard of it, but I'm not able to recall that. Okay. All right. No problem. So what are the functions of NABARD? NABARD, their main functions, NABARD is basically stands for National Agriculture, sorry, National Agriculture, National Bank for Agriculture and Rural Development. Its main function is to provide loans to the farmers. Like they provide loans not directly to the farmers, but they provide like financial assistance to the rural banks, and they can provide assistance to the farmers. It is basically the job of NABARD is basically to of refinancing. That refinancing term you need to include that. Okay. Refinancing term is a very important term for NABARD, so that you have to include. All right. What do you understand by contactless payments? Contactless payments, basically the contactless payments, like for example, if I say it's like the Google Pay, Phone Pay, which basically we do not need to, we can directly transfer it via electronic transfer. Like we do not need to go to the person. We do not need to go to the person and hand it to them. We can just transfer it via electronic medium. Okay. Can you give some examples of contactless payment? Yes, ma'am. It could be Google Pay, Phone Pay, Paytm, like any UPI payment system. All right. So since you have done your masters, so why won't in a major subject like agronomy you said, so why you're not going for a research work or for PhD? Why did you join that private sector immediately after your masters?
Actually, ma'am, I wanted to pursue my PhD, but due to some financial issues, I was not able to do that. So I didn't. All right. So my last question to you is like being a girl, how will you manage if you are posted to a very, very remote location where there are not available facilities for everyone, like the house help, the cooks. These are not available. Everything you have to manage from yourself only. And then going to the branch, coming late, work pressure is also there because banking industry has some of the other pressures, targets are there. How will you manage everything being a girl? Yes, ma'am. As I told you already that I was very much interested in banking sector. So like my mindset is already that I need to work very hard and I'm ready for that. And regarding like working and cooking, like preparing for my own self, it's like I was already like I have already stayed in rent houses, so it's like I can do this. Like after coming from my classes, I used to like prepare my own food. So I'm habituated with those orders. So it's like not very difficult for me, and I'm like already mentally prepared that yeah, banking is a tough job. So I'm already prepared with that. So there won't be any issue regarding that, and I'm already like from a rural background only, so it won't be any issue for me. All right, Ligam. So you are answering very beautifully. The only thing is that the schemes part, you are lagging behind that. So the schemes you have to prepare nicely. And secondly, the way that you are answering with a slight smile, like I told in my very first video of how to introduce yourself. In that video, I already told that you have to just maintain a good smile on your face while answering, and you are doing exactly that. So that is a very beautiful part. Secondly, you need to focus on your schemes. And third thing, that while you're answering something, if you're even forgetting something, just stop your answer over there. Like I asked you about Matsya Sampada Yojana, right? So you were telling about that, that's fine. The thing that you got confused was the year, right? You got confused in the year. So if you are confused about any of the years or any of the dates or any of the values in your mind, just don't state them there until and unless they ask you. If they ask you after you complete the explanation that it's for fishery farmers to promote the fisheries industry or the fisheries sector in our country, stop there. If they ask you that in which year it was launched, if you are confused and if they ask you, then you can answer that, sir, I'm unable to recall, like you said in some of the answers that I'm unable to recall. You can do that. But while answering, if you are confused, just don't state it there. Otherwise it will otherwise you will panic there because you will think that, oh, I did a mistake. But that's not a problem. Everyone fumbles, everyone gets nervous there in front of the panel. That is not a problem. But the only thing, keep your schemes up to date, and the way you are answering with a smile, that is really beautiful. So nothing more, just focus on your schemes. Okay.